Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. As you know, we are studying the chapter number 4, which is alkene and alkyne. और आजकल जो हम स्टडी करें that is alkene. Last lecture में we discussed about the reactivity of the alkenes as they undergo the addition reaction. So now today we will discuss about the reactions of alkenes, and it will include hydrogenation, the addition of hydrogen. Secondly, we will discuss the addition of halogens, and the last reaction will be the addition of hypohalous acid. So the very first reaction is the hydrogenation. It occurs in the presence of hydrogen gas and a metal catalyst which is finely divided. As this is the heterogeneous reaction हम ऐसे reactions को कहते हैं जहाँ दो phase मौजूद हों, जैसे hydrogen is in the phase of gas and the catalyst is in solid phase. So when the two different phases are present, the reaction is known as heterogeneous reaction. This is also known as catalytic hydrogenation as it occurs in the presence of a catalyst. आप reaction देख सकते हैं. We took a cyclic alkene and we added up a hydrogen molecule in the presence of platinum, and in temperature it gives us the saturated compound which is cyclohexane. This reaction is industrially very important. How it is important? It is used to convert the vegetable oil into ghee. अगर हम इंडस्ट्रियली इसको देखें तो ये रिएक्शन बहुत यूजफुल है क्योंकि ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर देता है और ऑयल की घी में कन्वर्जन होती है. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं? बाय looking at the amount of the hydrogen which is used for the hydrogenation. As you can see in the picture, the vitamin A requires the 5 molecules of hydrogen for the hydrogenation. It means there are the presence of 5 double bond in vitamin A. So in this way we can detect a number of double bond in a compound. What is heat of hydrogenation? वो amount heat की जो evolve होती है when 1 mole of unsaturated compound is hydrogenated. Heat of hydrogenation basically gives us the idea about the stabilities of the compound. जितनी heat of hydrogenation कम होती है, the molecule is more stable. As you are looking at the picture, we are having the two alkenes. One is cis-pentene, other is trans-pentene. Trans-pentene is having a less amount of heat of hydrogenation as compared to cis-pentene. So the stability of the trans-pentene is more as compared to cis-1. इसका रीज़न हम ये भी दे सकते हैं कि trans has more symmetry as the groups are present on the opposite side, so they are having a more symmetry and more stability as compared to the cis-pentene. So heat of hydrogenation हमें stabilities के बारे में idea देता है कि कोई molecule कितना stable होगा. If we look at the mechanism, the addition of the hydrogen is a syn addition. What is the syn addition? If two parts of the reagent are added up from the same side of a molecule, it is known as syn addition. As you can look at the picture, firstly the hydrogen is added up on a catalyst surface, and then alkene is also added up on catalyst surface, और finally जो hydrogen का bond है वो catalyst से टूट के alkene के साथ बन जाता है, and finally the catalyst will be released and alkene product will be formed. So this is known as syn addition as the both hydrogens are added up from the same side of a molecule. The next reaction is the addition of halogen. When the halogen is added up on double bond, it gives us the vicinal dihalides. If you are looking at the reaction, you can see that ethene is reacting with a bromine in the presence of carbon tetrachloride, and it is giving us 1,2-dibromoethane. Vicinal position हम इसी को कहते हैं when the two groups are present on the adjacent atoms, as it is 1-2 position. So halogen will be added up on the double bond. This reaction is also used to detect the double bond. And how can we detect the double bond? By the decolorization of a red color of bromine. ब्रोमीन का जब रेड कलर डिकलराइज हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है. तो इफ द कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, द इंडिकेशन विल बी red color of the bromine will be decolorized. If you look at the mechanism of the halogenation or the addition of halogen, the very first step is the
अटैक ऑफ अ डबल बॉन्ड ऑन ब्रोमीन. अगर आप पिक्चर पे देखें तो ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए हैं. As we know that bromine bond is a non-polar bond. There is no polarity because there is no difference of the electronegativity. But when it comes closer to the alkene, alkenes के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं and they get away from the one bromo. जब वो एक से दूर जाते हैं तो it gets a partial positive charge और जिसकी तरफ उनका झुकाव होता है that bromo gets a partial negative charge. So there are no charges on the bromine in absence of the double bond, but when alkene come closer to the bromine, the charges are developed which are partial positive and partial negative. Then double bond attacks on a partial positive bromo and the other bromo will leave. Product में अगर आप देखें तो we get the carbocation and within a molecule we are having a nucleophile as well as a electrophile. तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा ब्रोमो चूंकि हैविंग अ लोन पेयर सो इट विल अटैक ऑन अ कार्बन एंड इट विल गिव अस अ इंटरमीडिएट विच इज नोन एज ब्रोमोनियम आइन. 3 मेंबर्ड रिंग बन जाता है और ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. जो सेकंड ब्रोमाइड आइन ने लीव किया था नाउ इट विल अटैक ऑन अ सेकंड कार्बन एंड द कार्बन ब्रोमो बॉन्ड विल बी शिफ्टेड ऑन ब्रोमीन. And finally we will get a vicinal dihalide, but you are looking at the product, it is giving us the anti-addition. And what is the anti-addition? Anti-addition results in the trans product. Anti-addition जैसे हमने sin का पढ़ा है, it is opposite to the sin addition. The both part of the reagents are added up from the opposite side. When they are attached from the opposite side, it gives us the trans product. ट्रांस प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं जहाँ पे दोनों ग्रुप्स जो अटैच हों दो कार्बन के ऊपर या दो एडजेसेंट एटम्स के ऊपर दे विल बी फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. दिस वाज द एडिशन ऑफ हेलोजन. नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड. इट इज द हेलोजिनेशन बट इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. अगर हम उसको एक्वस मीडियम में करेंगे हेलोजिनेशन को तो वी गॉट द डिफरेंट प्रोडक्ट विच इज हेलोहाइड्रीन. हेलोहाइड्रीन हम ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं जिसमें एक कार्बन के ऊपर हेलोजन हो और दूसरे के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो. एज यू कैन लुक एट द रिएक्शन द डबल बॉन्ड the addition of halogen in presence of water gives us the हेलोहाइड्रीन. एक कार्बन पे ब्रोमो ऐड हो रहा है और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल. It goes through the same mechanism, but the first step is the same in both cases as in halogenation and hypohelix acid. The same intermediate is formed, which is bromonium ion, but the next step will be different. Rather, the bromide attack in the aqueous medium, the water will attack on a carbon. हेलोजिनेशन में हमने देखा था सेकंड पे भी ब्रोमाइड का अटैक था, लेकिन यहाँ वाटर की प्रेजेंस की वजह से नाउ द वाटर मॉलिक्यूल विल अटैक ऑन कार्बन एंड कार्बन ब्रोमो बॉन्ड विल बी शिफ्टेड ऑन ब्रोमो. अब जो प्रोडक्ट बनी है दैट इज नॉट अ न्यूट्रल प्रोडक्ट एज इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, सो इन द फाइनल स्टेप इट विल रिलीज अ प्रोटॉन एंड इट विल गिव अस द हेलोहाइड्रीन प्रोडक्ट विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे. गुड लक. अल्लाह हाफिज.